Assalamu alaikum, everyone. I hope I'm audible. Am I audible? Yes, Okay, great. So we'll just wait for one more minute and see who else is joining us. फिर हम start करते हैं. Assalamualaikum everyone, for everyone who's joined us just now. Welcome to the annual analyst briefing for Anglo Power Gen Kadipur. So we'll quickly skim through the slides. ये deck obviously uploaded है on the PSX portal और आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको देख भी लिया होगा. But I'm just gonna summarize a few quick things and then we can move on to the Q&A. So in the agenda, the first item is a quick snapshot of the sector updates and the macro update. In terms of macro, I think these numbers are more or less familiar with all of us, बल्कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे इसको. In terms of power sector update, we've just reproduced some numbers here that were available. Installed capacity हमारी जो है वो for fiscal year 2025 has reduced since last year's fiscal year number, and that is mainly because of the IPP contract terminations that took place in this time period. Power demand जो है वो हम आपको as of December 2025 दिखा रहे हैं और उसको compare कर रहे हैं with December 2024. So from Jan to December, or mainly in the second half of 2025, there was increase in the power demand, not a lot, but a small increase. And that is attributable to mainly to the industrial sector because of the different levies that have been implemented on captive power. और जो हमारा LSM बेहतर हुआ है in the second half of 2025, that has contributed to this marginal increase in the power demand number. Circular debt, obviously we all know there has been a lot of work done here by the government in line with the IMF requirements. So circular debt reported as of fiscal year 2025 was 1.6 trillion, which was lower than the number of same period last year, which was 2.4 trillion PKR. Moving on, this is a timeline of the key developments that took place in 2025 for Anglo Power Gen Kadipur. बहुत सारी इसमें से ऐसी चीजें हैं जिसपे हम in the previous analyst briefings discuss कर चुके हैं. I'm just going to highlight a few numbers that are important for us as of the year end. हमें obviously हमने amendment agreement sign किया था in February 2025, which moved the business model for EPQL from take or pay to hybrid take and pay. And then we, as a result of that, our receivables were cleared through a bullet payment of PKR 7.4 billion. Then in the second half of 2025, हमें अपना जो additional gas alternate fuel था,
जिसके अप्रूवल्स जो है वो 2024 से हमारे पेंडिंग चल रहे थे. Alhamdulillah, we got those approvals, and currently we're using the PEL gas to produce power also. In terms of collections, our collections for 2025 were 89%. This is other than the bullet payment that was received in March last year. So this is the collection other than the bullet payment. Dividend payout hamara as a result of this bullet payment was higher in the year, and we managed to pay out 11.75 rupees per share for the year 2025. CSR initiatives continued as per plan, and there were some achievements that we've highlighted here that the company received in terms of corporate governance, जिसपे हमें awards मिले थे from क्या कहते हैं SAFA award, and then we also received an award from ICAP and ICMAP. And then in the end, we also got an award from, it's not an award, it's just a highlight of achievements, basically just rating milti, and we were very high in the rating for EPQL in terms of HSE standards. So those were some of the highlights for 2025. I'll move on to the numbers now. Hamara revenue jo hai for the year was 11.9 billion, almost lower than same period last year, obviously because of the move, mainly because of the move to hybrid take and pay, and also because hamara load factor jo hai 2025 mein wo kam tha compared to 2024. We had a scheduled outage जिसको हम hot gas path inspection कहते हैं, which went on for around 20 to 22 days, जिसकी वजह से we were not able to generate electricity during that time period. Earnings per share correspondingly have gone down. The EPS for 2025 was around 2.6 rupees per share as compared to 6.6 rupees per share for same period last year. In terms of profit after tax, the tax for the year 2025 was 836 million, lower than almost 2 billion for last year. The mainly attributable again to hybrid take and pay model and the lower load factor in 2025. ये कुछ operational highlights. We were able to maintain an availability of 100%. The net electrical output was 774 gigawatt hours. And in terms of load factor, that translates into 42%. Receivables have significantly declined in 2025, which is good for the company, obviously, and that is mainly because of the bullet payment that we received in Q1 2025 as a result of moving to hybrid take and pay model. अब हमारा year end पे जो receivable है उसमें से overdue से 1.5 billion है, whereas the rest is due invoiced but not yet due for CPPAG to be paid. Last slide में I just want to highlight a few business risks for the company. Obviously, the first two pertain to gas depletion, जो हमारा ongoing risk है. With the addition of PEL gas, this has been slightly reduced in terms of its intensity and probability, but the risk carries on, and we have to look for alternate fuel gas options to ensure कि हमारी जो operations हैं वो कोई impact ना हो in the coming years. Circular debt जो है, that is much better for 2025 with all the interventions that the government has done and cleared the circular debt. But with the new geopolitical situation that has arisen, circular debt will continue to be a risk for power companies, for the economy, and we will continue to ensure कि हमारी जो collections हैं वो इंशाल्लाह circular debt का part ना बने. Volatile foreign currency exchange and economic liquidity risk, same for the geopolitical. Abhi hame nahi pata ki how the currency is going to move, how the interest rates are going to move. So this is a risk that the business will continue looking out for and ensuring mitigation against anything that comes up. Regulatory and policy inconsistencies. This is the macroeconomic policies. इसमें अगर कोई भी changes आया which directly impacts the power industry. So that is something that EPQL has always needs to be cognizant of and plan against. In terms of merit order, even though currently with the imported fuels being very expensive,
EPQL does not see any risk with not getting dispatch, but it's part of the indigenous fuel, so we're getting a regular dispatch on this. But this risk continues because कोई भी changes आई in the fuel cost for imported fuels in the future, this can always impact EPQL also. ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शन एक हमारा जेनेरिक रिस्क है. अगर कोई भी प्लांट पे आउटेज होती है विच इज नॉट प्लान्ड फॉर सडन कोई ऑपरेशनल इशू आता है तो ऑब्वियसली ऑपरेशंस इम्पैक्ट होते हैं. डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है रेवेन्यू पे बिकॉज नाउ वी आर ऑन हाइब्रिड टेक एंड पे मॉडल. सो दिस रिस्क हैज आल्सो बीन हाइलाइटेड फॉर एवरीवन्स टेंशन. Lastly, the most important topic that everyone wants to understand and hear about is the alternate fuel. The company is actively pursuing additional fuel options. इससे related हमने अपनी annual report में multiple times जिक्र किया है कि हम multiple fuel options पे काम कर रहे हैं because हमारी as a company, as a management यही कोशिश है कि क्योंकि हम hybrid take and pay model पे हैं, so we need to maximize our load factor and maximize our return on equity. So that the financial position of the company continues in the favorable direction. Three options that we have listed are Kandkot gas under the PPL corridor. Badr and Salam gas is with PEL, जिसके साथ हम already अभी काम भी कर रहे हैं. तो ये उनके different gas wells हैं जिससे हम additional gas के भी negotiation कर रहे हैं. So these three are our major plans, and if everything goes well, if we get this gas, then as we have mentioned in the annual report and in the director's report, we can increase this company's load factor from currently at say 42 to 45% जो आपको दिख रहा है financials में. With PEL addition, it can go slightly higher, and with addition of all these gas, we are hoping that we'll go somewhere around 70 to 80%, inshallah. So that's the update from our side. We are open to questions, and I'll just close the slides for now so that we can take questions from you all. Please feel free to give us the question, write the question in the chat, or you can raise your hand and we'll unmute. जी, अस्सलाम वालेकुम. Am I audible? Yes, you are. Ji, this is Saad Ali from Lucky Investments. Thank you for the presentation. And my question is around the gas supply, potential gas supply from Kandkot. I understand you just spoke about it, but can you give us some idea of at what stage of talks are you with PPL for availing that gas in future? And what is the likely gas price going to be? Is it because the current gas price that Kandkot gets is much lower than, let's say, PP12 price or what third parties have been able to get elsewhere in Pakistan? So any guidance on where the gas price could be, let's say, if you are able to reach an agreement with PPL for that gas supply? Thank you. Sure. So Adil, are you online? Yes. Adil, do you want to Am answer? I audible, Ekta? Yes, we can hear you. So Adil is our Chief Executive Officer, and I'll let So him abhi I'm answer. traveling, so signals might be weak. Ekta, wherever I drop, wahan se you just take over. Sure. So just to respond to your question on Kandkot gas. So Kandkot ki gas, we are actively engaged with all the stakeholders. इसका status ये है कि ये पहले gas allocate hogi, obviously to Guddu, and whatever gas that Guddu cannot consume would be available on as-is basis for sale. तो इसकी summary जो है वो भी move हुई है for comments to all the stakeholders in power, petroleum. उस summary में एक part तो obviously Guddu gas lock होगी और जो gas surplus होगी would be up for sale, and our efforts are to allocate this gas only to power sector.
जो इसकी प्राइसिंग है इसकी वो प्राइसिंग इस वक्त जो गुड्डू को मिल रही है वो एग्जैक्टली वही प्राइस है जो हमें गैस मिल रही है फ्रॉम ONGC. So from pricing point of view, it makes sense also, and we'll be on high on merit order. इसका likelihood क्या है मिलने का? We are pretty hopeful, and also because of the RLNG का issue, क्योंकि वो भी जो flow है would get some time to normalize. So we're hoping that the focus would be on indigenous fuel and diverting indigenous gas to power sector. Pretty hopeful to get a positive news someday this और ये समरी मूव हो गई है तो फिंगर क्रॉस्ड hopefully within this year we should have some good news on this. Inshallah. Thank you, Adi. Anyone else who wants to ask a question? जो questions chat पे हैं उस पे our team is going to respond separately on the chat. We have a question from, can you please unmute? Sorry. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Perfect. I just had a couple questions. I just briefly started doing research on the company. So, just a couple questions. Does the company expect the pay, the dollarized index pay to increase due to the recent geopolitical conflicts that are happening right now, or is it going to keep it at the 537 rate at the moment? And then I can go ahead and ask the other questions after you answer, or perhaps I can ask all the questions first and then you can answer accordingly, whichever is easier for you. Sure. Can you just repeat your first question? Yeah, sure. So since the company gets charged $537 for the gas from the Badr field, does the company expect those prices to increase because of what's happening with in the Middle East right now? Yes. So with the Brent oil cost going up, there is a chance that Pell's gas price will increase. But correspondingly, on the merit order, we also expect for Pell to hold its position more or less. Because along with that, all the imported fuels that are above it or below it will also move simultaneously. So yes, the price might go up. Whether do we see a merit order falling or dispatch risk? Not at this point. Okay, perfect. My next question was, so since the plant gets a mix of RLNG and gas from the Badr field, I just want to understand what was the mix exactly? How much does it consume on RLNG and how much does it consume from the Badr gas field? So we don't have RLNG in our mix. We get permeate gas from Kadirpur gas field, and we get gas from Pell's Badr gas field at the moment. Okay. There's no RLNG in the mix. Okay. Perfect. Just correct that. And as of right now, I believe the company has a contract with the Badr gas field. So exactly how long is that contract valid for? A contract with Pell Gas? Yes, with Pell Gas, yes. Yeah, that's for 3 years, but it can be renewed for another 3 years, the same contract. So current contractual term is 3 years, renewable for another 3 years. Perfect. So the one that we are in right now, when is that going to expire? It's going to end somewhere in 2028, if I'm not wrong. 2028. Perfect. That is awesome. Okay, perfect. And does the company have any planned shutdowns or maintenance in the short to medium term? I believe like a deep maintenance occurs every 6 years, if I'm not mistaken, but I just would like to confirm. Yes, so the major maintenance plan that we had was already implemented in 2025. We might do some
what do you say, generic maintenance that is required on a annual basis, but that will not be long. It will be say for 5 to 8 days max. Okay, perfect. And usually these general maintenance, they take like a week or two. Is that usually how long Yes, they yes. take? General Okay. maintenance. Yeah. Perfect. Okay, I believe that's all the questions that I have. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. Thank you so much. Perfect. Sorry, I just had one more question. Sure. So you mentioned that you're looking at the Congote field, the Butter field, and there was another one. I'm sorry if I missed it over the presentation. Yeah. It's called Salam. Yeah. Salam, right. And what rates would you be receiving from those gas fields, and what would the contract tenure be like from either gas field? So the negotiations are currently ongoing, but Okay. we as management are trying our best to keep the cost more or less similar to what we have on PEL right now. We Okay. don't want to have anything more expensive because that, on the merit order, that will not generate enough dispatch costs, so not much value addition. So we are aiming to keep it around the same price as PEL, but we are too early in the process to confirm anything. I'm just sharing with you what our intent is. Perfect. Thank you very much. No problem. हेलो Yes, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक तो मैम ठाक। ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी शिफ्ट हुई थी टेक और पे से हाइब्रिड टेक एंड पे के ऊपर, जी तो इससे जो है फ्यूचर में अर्निंग्स पर शेयर का क्या इम्पैक्ट होगा, प्लस जो रिसीवेबल्स थे वो तो लास्ट ईयर आपने डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पास ऑन कर दिए। जी एक तो ये क्वेश्चन था, और दूसरा मैम ये जो रुपी डिवेल्युएशन का क्या इम्पैक्ट होगा आगे जाके, अगर इन केस किसी भी रिस्क फैक्टर से डिवेल्युएशन होती है तो कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका? ठीक है। पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ मैं। पहले देखिए, हाइब्रिड टेक एंड पे पे एक चीज बहुत क्लियर है कि जितना ज्यादा आप बिजली बनाएंगे उतनी ज्यादा कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। तो जैसे अभी आपने देखा कि हम मल्टीपल गैस एवेन्यूज एक्सप्लोर कर रहे हैं, अगर उससे गैस आ जाती है तो अभी जो हम 50% लोड फैक्टर पे हैं उससे इंशाल्लाह हम 70 से 80 लोड फैक्टर पे 80% लोड फैक्टर पे जा सकते हैं। तो जो कंपनी के अर्निंग्स हैं वो डायरेक्टली को रिलेटेड होंगी विद जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा, जिसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी ये कोशिशें कामयाब हो गई तो इंशाल्लाह देन वी विल बी एबल टू गिव बेटर प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर होल्डर रिटर्न इन द कमिंग ईयर्स। सो पहले सवाल का जवाब ये हो गया। यस, हमने रिसीवेबल्स डिश आउट कर दिए हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स। दैट्स बिकॉज वो सारे पुराने पिछले सालों की प्रॉफिटेबिलिटी थी जो हम पहले शेयर होल्डर्स को नहीं दे सके थे बिकॉज हमारे पास कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स थे। तो हमने बिल्कुल ये सही समझा कि जैसे हमें कैश फ्लो अवेलेबल होता है तो हम सबसे पहले शेयर होल्डर को उनके रिटर्न्स दें। सो वो हमने क्लियर कर दिया। अब फ्यूचर का जो भी डिविडेंड होगा वो उस साल की प्रॉफिटेबिलिटी से कोरिलेटेड होगा ऑब्वियसली, जिसके लिए हमारी कोशिश चल रही है कि हम जितनी ज्यादा गैस और जितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें और जितनी ज्यादा अपनी क्या कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज कर सकें। इसमें एक चीज जो हमारे काम आती है वो ये है कि कंसिडरिंग जो आजकल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट इज प्रीटी कीन कि जितने भी प्लांट्स इंडिजीनियस फ्यूल सोर्सेज पे चल रहे हैं या चल सकते हैं उनकी डिस्पैच मैक्सिमाइज की जाए। तो ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन गया है ईपीक्यूएल के लिए टू फर्दर डेमोन्स्ट्रेट कि हम लोकल इंडिजीनियस फ्यूल्स यूज करते हुए अपनी जो प्रोडक्शन है और डिस्पैच है वो फ्यूचर ईयर्स में और बढ़ा सकते हैं। यही सवाल थे दोनों। आई थिंक आई मिस्ड डिवैल्यूएशन वाला, सॉरी डिवैल्यूएशन वाला आपका सवाल था। देखिए डिवैल्यूएशन पे क्या कहते हैं हमारे ओएनएम में
एक कैप लगा हुआ है इंडेक्सेशन पे, एंड दैट्स ऑन 70% करेंसी डिवैल्यूएशन. सो 70% तक तो द बिजनेस इज कवर्ड, बट 70% से बियॉन्ड अगर डिवैल्यूएशन हुई तो उससे हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि हम स्पेयर्स वगैरह और कुछ अपनी क्या कहते हैं रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, जिसके लिए हम डॉलर्स में पे करते हैं. सो वो अगर महंगे हो गए तो फिर और वो 70% से ज्यादा महंगे हो गए तो इम्पैक्ट होगा. बट इंशाल्लाह 70% तक अगर इस तरह की कोई चीज आई, सो वी विल कवर्ड इन दैट. I hope I've answered your question. इसमें हमने चार्ट पे भी एक जवाब दिया हुआ है, राइट, ऑन करेंसी डिवैल्यूएशन ओनली. दैट्स प्रॉब्ली मोर डिटेल, सो यू कैन आल्सो रेफर टू दैट. Any other questions? Just one more question. Sure. Please go ahead. Perfect. Thank you. So just my general understanding. So you touched on merit order, and I understand how important that is in terms of government demand. So what exactly would cause the companies to merit order to go up or down in the list of the other IPPs that there are? You're asking me how do I see the merit order going up or down in the future? Yes, and what would be what would cause for that to either go up or down? Like some of the main drivers for that. Sure. So the merit order is directly linked to the fuel cost. The price of gas that we are getting is directly correlated to our ranking on merit order. So and obviously in relation to other plants also. So if other plants who are on imported fuels, if they become expensive, then my merit order will improve, because my gas, if stays on the same price, and considering that it's indigenous fuel resource, then my merit order should go up. If my gas price also increase in the same line as imported fuel cost, then there will be no change in the merit order. So this is how the merit order works. It's directly dependent on the cost of fuel that we are getting. Okay. And where do you see the company's merit order being in the short to medium term? So we hope to stay where we are or even get better. It really depends on how the imported fuel plants and whether that's imported coal plants that are operating above us on the merit order to behave in the forthcoming future. If coal becomes expensive and the inventory that they have depletes, there is a chance that they might get more expensive and our merit order might increase. But it is yet to be seen what happens. As you know, we don't know if the war will end in the next week or it will end in the next 3 months or 6 months. Of course. Situation changes every day. So, but this is how the merit order can move. Perfect. Thank you so much. You've been very helpful. Thank you. Thank you. हेलो. Yes. जी. एक क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे कि बुलेट पेमेंट पे एक आ गई है, ठीक है, आगे जाके जैसे डिस्पैचेस अगर बढ़ती हैं और लोड फैक्टर भी बढ़ता है, तो गवर्नमेंट से हमारे जो रिसीवेबल्स होंगे वो टाइमली पे होंगे या नहीं, उसमें भी रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होगा आगे जाके. देखिए, हमारी जो क्या कहते हैं, जब बुलेट पेमेंट क्लियर हुई थी फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि हमारी सारी पेमेंट जो है वो टाइमली होगी. ऑब्वियसली हमारा कलेक्शन परसेंटेज लास्ट ईयर 100% नहीं था, इट वाज 89% एज आई जस्ट शोड यू. सो थोड़ा सा स्लाइट 10% तक की कलेक्शन है जो डिले से हो रही है. 90% वी आर एबल टू कलेक्ट.
इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि बुलेट पेमेंट नहीं है और सिर्फ क्या कहते हैं डायरेक्ट मंथली पेमेंट्स हैं, तो वी शुड बी एबल टू डू बेटर इन टर्म्स ऑफ कलेक्शंस। बट हैविंग सेड दैट, जो हमारी आजकल जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है एंड यू नो हाउ द इकोनॉमिक सिचुएशन इज करेंटली अंडर stress, पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज्यादा नहीं है, but overall, so we not sure how circular debt pans out, how our government responds to IMF requirements, what happens, currency devaluation होती है नहीं होती है, lots of factors are moving at the moment, but हमारी as management यही कोशिश होती है कि हम अपनी collections maximize करें। We have a special team in Islamabad who visits क्या कहते हैं CPPAG ऑफिस ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, ताकि हम पैसे जो है वो अपने ज्यादा से ज्यादा निकलवा सकें। सो हमारी उम्मीद यही है कि हम कलेक्शंस मेंटेन करेंगे या और बेहतर करने की कोशिश करेंगे इन 2026। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। Any more questions? Anyone? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जो आपका तो इंडिजिनस फ्यूल है, तो ये इस सिनेरियो जो आजकल चल रहा है, इसमें आपका इंडिजिनस फ्यूल की शिफ्टिंग तो नहीं हो जाएगी कहीं के कहीं दूसरी जगह शॉर्टेजेस आई तो वहां से गैस को अगर किया जाए तो उसमें क्या सिचुएशन होगा, या इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सच थिंग हैपनिंग? समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? शिफ्टिंग से क्या मतलब है? मतलब गवर्नमेंट आपको यहाँ से होल्ड कर दे, जो गैस अभी आपको मिल रही है जी। लोकल फील्ड से, तो दूसरी जगह अगर हमें गैसेस की शॉर्टेजेस होती हैं ड्यू टू RLNG एंड दिस थिंग, तो ये गवर्नमेंट कहीं शिफ्ट तो नहीं कर देगी आप लोगों के पास से इस गैस की अवेलेबिलिटी? अच्छा, आप कह रहे हैं कि एलोकेशन चेंज कर दे वो, हाँ हाँ, जी सपोज जी। पावर सेक्टर से डोमेस्टिक सेक्टर या टू जी जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। फर्टिलाइजर को चला जाए, क्योंकि वो कहेंगे क्या बिजली बना के उसके उसके लिए क्या रिस्क है? सो हमारी जो गैस होती है जिसको हम परमिएंट गैस कहते हैं, इट्स एक्चुअली फ्लेयर्ड गैस, जिसका मतलब है कि ये जब गैस प्रोसेस होती है उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो उसको यूज करके EPQL बिजली बनाता है। So as long as Kadirpur gas field is processing and using this gas, OGDCL इसको process कर रहा है, use कर रहा है और supply कर रहा है, तो तब तक we don't foresee कि flared gas में कोई change आएगी। ठीक है जी, थैंक यू। Thank you. Assalamu alaikum. I'm audible. Yes, you are. जी, दिस इज असद अली फ्रॉम टॉपलाइन। मेरा एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग, आपने लोड फैक्टर का एक्सप्लेन किया कि यू आर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेटिव फ्यूल्स के जिससे आप अपनी लोड फैक्टर को इंक्रीज कर सके। बट एक एक प्रॉब्लम जो मेनली जो अब हमें नज़र आ रहा है वो नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी का है। तो अगर आप ये इसमें थोड़ा गाइड कर सकती हैं कि कैपेसिटी इतनी है कि साउथ टू नॉर्थ पे वो ट्रांसफॉर्म कर सकें, आप इलेक्ट्रिसिटी आप 100% पे एग्जांपल आप चल रहे हैं तो वो सप्लाई हो सकती है नॉर्थ साइड पे, क्योंकि लोड फैक्टर वही है और ड्यू टू करंट सिचुएशन RLNG प्लांट्स बंद होंगे तो एक बड़ा डिमांड सेक्टर वहाँ पे क्रिएट होगा। तो इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें, थैंक यू। देखिए, हमारा जो प्लांट है कादिरपुर का, इट्स राइट इन द मिडिल ऑफ पंजाब एंड सिंध, लाइक सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे। सो इट्स नॉट एक्सट्रीम साउथ, जो हमें साउथ की ट्रांसमिशन में पहले इश्यूज आ रहे थे, जैसे थर से इवैक्यूएट नहीं हो पा रही थी बिजली, एंड देन दैट वाज सॉर्टेड। ये वाला जो हमारा प्लांट है ना, ये मिडिल ऑफ द कंट्री है। सो इसके लिए we have not encountered that much of a problem in terms of evacuation. इसको मोस्टली चलाया भी जाता है क्योंकि ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए इसका चलना इम्पोर्टेंट होता है। सो फ्रॉम अ ट्रांसमिशन परस्पेक्टिव, EPQL के लिए द रिस्क ऑफ डिस्पैच इज वेरी मच लोअर एज कम्पेयर टू यू कैन से अदर पावर प्लांट्स में बी इन द लोअर सिंध, जो कि अब तक काफी ट्रांसमिशन के इशू रिजॉल्व हो गए हैं, एटलीस्ट फ्रॉम द थर्ड पार्ट। बट EPQL के लिए वो कभी इशू इतना ज्यादा था नहीं, even when it was producing at higher load factors.
Any other question? इस क्वार्टर में आपका करंट लोड फैक्टर क्या रहा है? वही एवरेज जो प्रीवियस है या कुछ इंक्रीज आया है जो 31 मार्च को एंड हुआ है क्वार्टर? More or less same ही है, ठीक ठीक। बट हम आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह इन द Q1 एनालिस्ट ब्रीफिंग, जो कि 2 से 3 हफ्ते में, बट या मोर और लेस सेम। चलिए हम 1 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, if there are any questions. एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो लोड फैक्टर आपका ये 4 years 42 45 या इसी परसेंटेज के अराउंड रह रहा है, तो आई जस्ट वांट जी टू अंडरस्टैंड कि ये इज इट बिकॉज ऑफ द मेरिट ऑर्डर या जो आपकी कादरपुर की जो सप्लाई है उसकी लिमिटेशंस है या गैस की जो सप्लाई है उनकी लिमिटेशंस की वजह से ये जी, गैस की लिमिटेशन की वजह से मे बी की गैस, क्योंकि आई थिंक सिंस 7 to 8 years has started depleting, so we have gradually come down to this level. जो आपको 2025 में 42% दिख रहा है, अलबत्ता वो कमी सिर्फ scheduled outage की वजह से है. Otherwise, we would have been able to more or less maintain the 45 factor. With PEL coming on, we are hoping in 2026 we should be able to do better than 45%. ओके, थैंक यू। Thank you. Chaliji, thank you so much for all of you joining and for all the questions. We will see you soon, inshallah, in the Q1 analyst briefing, which is probably 2 to 3 weeks later. Thank you so much. Allah Hafiz.